जो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट क्या होते हैं, कला के तत्व क्या होते हैं, तत्व से जैसे हमें पता चलता है एलिमेंट्स आप इस तरह से समझिए जैसे कि ये कहा जाता है कि जो इंसान है वो 5 तत्वों से मिलके बना है। वो 5 तत्व हैं फायर, वाटर, अर्थ, एयर एंड स्पेस यानी स्काई। इसी तरीके से कला का जो निर्माण हुआ है वो भी कुछ तत्वों के मिश्रण से हुआ है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो एक आर्ट होती है उसके अंदर कुछ तत्वों का होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो एक आर्ट कहलाती है। तो आइए आज हम इन तत्वों के बारे में जानते हैं कि कौन से बेसिक फीचर्स, कौन से बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो एक आर्ट को कंप्लीट करते हैं। हम आर्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है विजुअल आर्ट और सेकंड है परफॉर्मिंग आर्ट। विजुअल आर्ट, विजन, जैसे कि आपको इस नाम से ही थोड़ा क्लियर हो जाएगा, विजन मतलब देखना। तो विजुअल आर्ट क्या हुई? देखने वाली आर्ट, कि जिस आर्ट को हम देख सकते हैं और उसे परसीव कर सकते हैं। दूसरी है परफॉर्मिंग आर्ट, जैसे कि इस नाम से पता चल रहा है परफॉर्मिंग यानी परफॉर्म। जिस आर्ट में हम परफॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं परफॉर्मिंग आर्ट। विजुअल आर्ट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पेंटिंग। परफॉर्मिंग आर्ट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डांस। We have different kind of dance in our country. बहुत तरीके के क्लासिकल डांस है, बहुत there are so many types of dances in our country. इसके बाद हम इसको थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आती है चित्रकला यानी पेंटिंग, इसको बोलते हैं विजुअल आर्ट। नेक्स्ट है मूर्ति कला, स्कल्पचर्स, जिसको आप स्टैच्यूज भी कहते हैं जनरल लैंग्वेज में। This is an example of 3D sculpture. इसके बाद आता है निर्माण कला, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर क्या है? परफॉर्मिंग आर्ट। आर्किटेक्चर में हम निर्माण करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो इसीलिए हम उसमें परफॉर्म करते हैं। Here I have shown some example of architecture. नेक्स्ट है म्यूजिक एंड डांस। एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, परफॉर्मिंग आर्ट। तो म्यूजिक और डांस जो है वो है परफॉर्मिंग आर्ट। इसके बाद आती है सिंगिंग क्या है? लिसन एंड रीडिंग। आर्ट का सबसे बेसिक एलिमेंट है लाइन, एंड लाइन इज फॉर्म बाय स्मॉल डॉट्स। लाइन जो है वो बनती है डॉट्स से। अगर आप डिफरेंट डॉट्स को क्रिएट करते हैं देन इट मेक्स अ लाइन। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है आर्ट का दैट इज लाइन। अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइन्स। कैसे? फर्स्ट इज सिंपल लाइन, जैसे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, तो इनको बोलते हैं सिंपल लाइन। इसके बाद आती हैं स्पाइरल लाइंस, जिसके अंदर हम वेव्स, कनकेव, कन्वैक्स। नेक्स्ट है एंगुलर लाइन। एंगुलर लाइन होती है जिसके अंदर एंगल्स होते हैं। Here I want to show some examples of line drawing. It's called sketching. It is the basic thing which all the students should have learned to create something. लाइन से हम क्रिएट करते हैं शेप्स। अब वो हम 2D शेप्स भी क्रिएट करते हैं, हम 3D शेप्स भी क्रिएट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि हम पेंटिंग भी करते हैं, हम स्कल्पचर्स भी करते हैं। तो हम 3 डायमेंशंस को भी हम पेंटिंग के थ्रू, अपनी लाइंस के थ्रू पेपर पर दिखा सकते हैं। तो 2 डायमेंशंस के अंदर कुछ ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स आ जाती हैं। टू डायमेंशन में हैं, वी हैव सर्कल, we have square, triangle and rectangle. In the same way, if we talk about 3 dimension, then we have sphere in place of circle, we have cone in place of triangle, pyramid,
somewhere is a mixture of these two elements, triangle and cone. And next is cube. Cube is the 3D form of square and the cuboid is the 3D form of rectangle. So when we learn about shapes, we generally learn about the basic 2D shapes and 3D shapes. इसके बाद बहुत सारी शेप्स होती हैं जो नेचर में होती हैं, बहुत सारी होती हैं मैन मेड होती हैं. बट इफ़ यू सी देर आर सो मैनी मैन मेड ऑब्जेक्ट्स एंड द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो, वी फाइंड ज्योमेट्रिकल शेप्स इन देम. लाइक इफ़ यू सी अ चेयर, इफ़ यू सी अ बुक, इफ़ यू सी अ बॉटल. In natural things we have tree. In natural things we have mountains, we have sun. So there are so many shapes, but their basic shape, if we imagine, we can see that there is a geometrical shape behind them. अगर आप किसी ट्री को देखते हैं, जैसे आपने एक बेसिक शेप बनाई ट्री की, like this. सो जैसे कि आप देख सकते हैं इस ट्री के अंदर एक ट्रायंगुलर शेप है, हिडन शेप, और एक है रेक्टेंगुलर. इसी तरीके से जैसे हम बनाते हैं माउंटेन्स, तो इसकी जो शेप है वो भी एक हिडन शेप है, ट्रायंगुलर. ऐसे ही जितने भी मैन मेड और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर एक ज्योमेट्रिकल शेप होती है. तो ये एक बेसिक फीचर्स ये कह सकते हैं, दिस इज़ द बेसिक एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट ऑफ आर्ट. अब इसके बाद आते हैं फॉर्म्स होती हैं सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल फॉर्म. This is an example of symmetrical form. अब हम देखेंगे कि सिमेट्रिकल शेप्स हम कैसे डेवलप करते हैं. आई एम गोइंग टू अप्लाई सम कलर्स ऑन द शीट. So, अब आप देखिए, this is called the symmetrical pattern. This is an example of asymmetrical pattern. इसके अंदर भी geometrical shapes हैं, but they are not symmetrical. Now there are some pictures of both symmetrical and asymmetrical pattern. इसके अंदर आप देख सकते हैं एक तरफ symmetrical pattern है और एक तरफ asymmetrical pattern. Next element of art, that is color. Okay, तो बच्चों कलर्स जो हैं दैट इज़ द मेन पार्ट ऑफ अ पेंटिंग. अगर हम किसी भी पेंटिंग को बनाते हैं, कलर्स क्या है? कलर्स जो है इट गिव्स प्लेजर, इट गिव्स लाइफ, इट गिव्स enthusiastic feature to your painting. There are two types of colors. I know you all know it very well कि प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं और सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं, बट स्टिल आई विल टेल यू. प्राइमरी कलर्स होते हैं रेड, येलो, ब्लू. इसके बाद आते हैं सेकेंडरी कलर्स दैट आर पर्पल, ऑरेंज एंड ग्रीन. Here we have one more example of primary and secondary colors all together. Now we have color wheel. Color wheel जो होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स से मिलके बना होता है. इसके अंदर प्राइमरी कलर्स और सेकेंडरी कलर्स होते हैं और इसके साथ साथ इसमें और भी कलर्स होते हैं जो कि कुछ प्राइमरीज और सेकेंडरी कलर्स को मिलाकर बनते हैं. So let's see how to make color wheel.
First of all, we have to make two circles, one big circle and one small circle. For that, I have make a big circle measuring 4 inches and the smaller one is 3.5 inches. After that, I am going to divide it into 12 parts, 12 boxes actually. Now I am going to fill the primary colors, secondary colors and tertiary colors in the boxes. First I will use primary colors. Now we will leave 3 boxes and then we will fill primary colors. After primary, I am going to fill secondary color in the boxes. As you can see how I am leaving the boxes in between primary and secondary color. After that, I am filling here tertiary colors. These left out boxes are for tertiary color. These are the mixture of one primary and one secondary color. For that I am using brush pen and mixing 2 colors to make this tertiary shade. So our color wheel is ready. Next element of art is texture. Texture is also a very important part of painting. Texture, it can be a mild texture, it can be a texture by hand, by colors, by natural things, by man-made things. So we have classification of texture here. We have actual texture which is found in nature. These are some examples of natural textures. We found many textural forms in nature. Every form has its own texture. Wood, and if you see some vegetables, if you see some herbs and shrubs, you can find different kind of texture. Mushroom has also a texture. Stimulated texture, visual texture that we create on painting or somewhere. Stimulated जिसको जानबूझ के उभारा गया है so that we can feel the texture through our eyes visually. Stimulated texture involves trying the visual effect of texture without actually adding it. Texture ऐसे बनाया जा सकता है which looks like real 3D look, but actually it is not. Here are some example of stimulated texture. Abstract texture होता है जिसकी कोई form नहीं होती. When we make murals, so as a background we make this kind of textures. Abstract textures basically derived from the appearance of an actual surface, but rearranged or we can say simplified by us. There are some examples of these textures. After texture, next element we have perspective. Perspective means outlook.
आपका नज़रिया किसी चीज़ को देखने का. If we talk about perspective in art, it is an illusion of 3 dimension on a 2-dimension surface. Basically, perspective is what makes a painting seems to have form, distance, and it looks real. It is not real, but gives an illusion of 3Dness. A rule of perspective applies to all subjects, whether it is a landscape, seascape, still life, interior scene, portraits or figure painting, anything in art we made, we use perspective. We have 2 types of perspective. एक होता है aerial perspective and the second one is linear perspective. Aerial perspective is it's like representing more distant object as fainter and more blue. It is like also called atmospheric perspective. It is a method of creating the illusion of depth or recession in a painting or drawing by modulating colors to stimulate changes affected by the atmosphere on the colors of things seen at a distance. जब हम किसी चीज़ को दूर से देखते हैं तो it becomes more blur and more blue. जो कलर्स होते हैं they become fade. जो उनकी sharpness होती है वो dullness में बदल जाती है. It's being said that Leonardo da Vinci first used the term aerial perspective in his painting. As you can see his painting, there is the aerial perspective. And the second one is linear perspective. Linear perspective is a rendering technique in art to create the illusion of depth on a flat surface. It is the most basic form of perspective in which parallel lines appears to meet and the distance at a vanishing point on the horizon line. Here is an example. You can see a point, vanishing point, where 2 parallel lines meet at an end. This is just kind of an illusion. It is not like that the parallel line is meeting somewhere. Here is another example of linear perspective. Here is a group of buildings. These buildings looks like they are meeting at a point. These lines, as you can see, shows the vanishing point. Let's have some examples from nature itself. Here are some examples. Tree and the road is meeting. It's called a vanishing point, but this is an illusion. Some monuments also is a good example of linear perspective. As you can see, the different kind of lines. We see monuments from upper eye level. That's why they looks like huge. I hope you have understood very well the elements of art. Don't forget to like, share and subscribe the video so that other students can also learn the same. Thanks for watching.